Hello and welcome back to Chasing the Target. What a day of Test cricket we've had, whether it's Australia versus Pakistan, India versus South Africa, plenty of drama. Talk about the India South Africa game first. उसमें भाई पहले तो South Africa टॉस जीत के बैटिंग करे, उसमें 55 ऑल आउट, 55 ऑल आउट South Africa. Incredible bowling from Mohammad Siraj taking a 6 foot. Then India came out to bat. It looked nice, sunny. It looked like they're going to take a 150, 200 run lead. They were off to a good start around 100 for 2. उसके बाद भाई 153 for 4. उसके बाद 153 all out, 6 wickets, 0 runs. South Africa back in the game just like that. And then they came out to bat, got off to a good start. Again, a few wickets fell, and in the end, South Africa finished the day 62 for 3. They're behind India 36 runs. Bhai, ye game mein kuch bhi ho sakta. I think India failed to take the advantage. They bowled so well in the first innings and they took all their catches. Or फर्क ये था कि everything was taking the edge and every chance was being taken. India were so clinical, but with the bat they let them down. Whether it's Rohit Sharma, whether it's Shubman Gill, whether it's Virat Kohli, KL Rahul, Shreyas Iyer, all these guys, they let Team India down. I think so they let their bowlers down. At least I think 150 की लीड होना चाहिए था ये पिच पे. Yes, there was extra bounce, but there was ways to tackle that. I don't think they had to fend off everything. Yes, South Africa also struggled, but as the day progressed, जो South Africa जब बैटिंग करी थी और जब इंडिया बैटिंग करी थी, फर्क तो था. It was easier for batting, not that easy, but it was easier for batting. So a bit disappointing the way India batted, especially that collapse next level. And आप South Africa को कमेंट करना पड़ेगा जो कप्तानी एलिगर करा और जो bowlers एफर्ट लगा, स्पेशली बर्गर भाई जो एक्स्ट्रा बाउंस निकाल रहा था, एक्स्ट्रा केचप, एक्स्ट्रा टोमेटो सॉस, एक्स्ट्रा मेयोनीज इन दैट बर्गर. ही बोल्ड सो वेल, सेंसेशनल बॉलिंग फ्रॉम हिम. एंड देखो भाई एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, लेकिन जो बॉलिंग कर, जो लाइन लेंथ हिट कर रहा था, शोड इमेंस मैच्योरिटी एंड इमेंस स्किल एंड टैलेंट. तो आई कमेंड हिम ओवर देयर. इट वाज an incredible performance from Berger. And overall South Africa will be happy, at least they come back in the game. I think जो उन लोग शुरुआत हुई, उन लोग they were probably thinking, man, we're done in this game, 55 all out, there's no way we're coming back. But the way they fought back, they've given themselves a chance. अभी भी 36 रन से उन लोग ट्रेल कर रहे हैं. अभी भी there's a mountain to climb. लेकिन if they get any sort of lead of 100, 150, game is on. Because आप देख चुके हैं, India can collapse, India can get under pressure. And if you get a 150 kind of target, India will shake a bit, but they will have to improve the batting. If you want to be the best, if you want to be known as world champions or whatever it is, आपको ये conditions में जीतना जरूरी है. And आपको इतना अच्छा सिराज दिया. I think incredible bowling, ठीक है. I think एक down the leg side catch था. Apart from that, जो सिराज bowling किया, remarkable. I really enjoyed his bowling. He's done it in the Asia Cup, Colombo में, और अभी जो South Africa में, Cape Town में जो bowling किया, बहुत अच्छी bowling, उन्हें right areas में डाल रहा था. And he put it on a platter for the Indian team. I think जो bowling किया 55 all out, तो भाई game आपके हाथ में होना चाहिए. मगर unfortunately आप जिस तरीके की बैटिंग करे, it gives South Africa a chance. It's not South Africa on top in this game. India is still ahead. लेकिन South Africa, you've seen the way they fight. They have the crowd behind them. They understand these conditions. उन लोग, they're not going to die. अभी Aiden Markram जो है 36 or 51 है. अगर उन्हें टिक गया, if he gets betting him for support, who already looks decent, 7 of 6, then they can pile on the pressure. And any lead on this kind of wicket will be tricky for India. ठीक है, 40 रन ऐसा अगर चेस करना है वो कर देंगे, लेकिन अगर 100 के ऊपर हो गया, स्पेशली 150, 200, फिर बहुत मुश्किल चेस होगा. मैं बता रहा हूँ आपको, 180, 160, 70 बहुत मुश्किल चेस हो सकता. And it looks like the wicket might become even more difficult. It looked decent after the first innings. Towards the second, third innings, it looked decent. लेकिन भाई कितने विकेट चले गए, 22-23 विकेट चले गए आज. I've never seen so many wickets fly like this in a test match. एक दिन में almost पूरा game खत्म हो गया था. But credit to India first. I think the way they bowled, and then the way South Africa bowled and fought back. Now it looks like an even contest. Mukesh Kumar, I think he bowled pretty well today. Second innings, maybe first innings, maybe. I can't believe I'm talking about 2 innings in one day. Like it's been 3 innings now, 2.5 ho gaye. And Mukesh Kumar jo bowling kiya, I think he's shown that he deserves a place in the side. I felt he bowled well. He created chances. Before he got the first wicket in the second innings, he bowled a peach of a delivery, and that set it up for India and allowed them to get breakthroughs and put some sort of pressure on South Africa. It's looking good. I think this test match is poised very well. Abhi, I think 50 हो सकता है, 55. You'll say 60-40 in India's favor just because of the situation right now, but I think it's a 50-50 game. South Africa, they can get that first session कल बहुत crucial होगा. India will need wickets, South Africa will need runs. So
It'll be interesting to see how the pitch behaves also day to play. Will it be easier to bat on? Will it be even tougher? As the day progressed, I felt it was decent to bat on. If you see, even India, TK, they collapsed, but they still scored 150, whereas South Africa 50 all out ho gaye the. And South Africa also much better show in the second innings compared to their first innings. At least they, crossed their first innings total quite comfortably. So I think वो भी देखना पड़ेगा कि भाई pitch कैसा behave होगा second innings में. Second day pe, or yeah, how both teams react to that, what are the plans, strategies. Again, I think India bowled remarkably well, fielded really well, but batting has disappointed them. Rohit Sharma, again, he got off to a flyer, very good start. Magar, yeah, he also got a DRS in his favor. Everything was going well, magar फिर wicket गई उसकी. आपके शुभमन गिल अच्छा स्टार्ट देके फिर उन्हें भी आउट हो गया, विराट कोहली अच्छा स्टार्ट देके आउट हो गया, केएल राहुल भी अच्छा स्टार्ट देके आउट हो गया, श्रेयस अय्यर is struggling and he will say I didn't get out to the short ball, but the short ball is causing him problems. It's setting him up for these deliveries. That is why अगर आप उसका सेटअप देखते हैं, like not just the ball he gets out on, the way he's getting set up, he's trying to expect that short ball and they're nailing him. They're either on the back foot or front foot, they're nailing him because of that short ball plan और उन्हें उसको तकलीफ हो रही है. And he has to have a much better improved performance. And I expected it. Bhai, masla hai Shreyas Iyer kuch. No matter what he says, masla hai. And maybe not getting out to the short ball, magar that is part of the plan, part of the setup. But short ball hi usko out kara raha hai, in a sense that they're planning for that. He's also planning to play that, and then they're nailing him on the back foot or whatever it is. So he will have to improve. Shubman Gill also has to improve, I think, after getting such a good start like that. Right now, Bumrah and Mukesh both have wickets for India, and they'll have to continue. Kal naya ball रहेगा, not naya but new wish you would say, and they'll have to try to get Markram out first, and uske baad pile on the pressure on South Africa. You can see South Africa they rely a lot on Markram and Elgar. Yes, Bedingham is there. They have other batters, lekin one of them, if they stay, it allows the youngsters to also have that opportunity to score runs and takes the pressure off them. So they will be key wickets, especially Markram for India. And let's see how it pans out. I think Australia और पाकिस्तान का गेम था, वो भी बहुत जबरदस्त मैच था. At one stage ऐसा दिखा कि पाकिस्तान एक सेशन या डेढ़ सेशन में खत्म, ऑल आउट हो जाएंगी. They were like 40 for 4, 50 for 4. Then Rizwan, I batted beautifully, batted really well, and then Salman Agha came, he scored runs, he took the attack to Australia. और फिर आमिर जमाल जो बैटिंग किया भाई, उसमें वो टाइम पे 228 for 9 था, 250 मैक्स पहुंच रहे थे पाकिस्तान ने, 300 के ऊपर लेके गया स्कोर. He scored 80 runs. I think that partnership, the last wicket partnership, was sensational. It's given Pakistan a fighting chance in this game. They almost got the wicket of honor. पहले ही ओवर में, the last over of the day, जो पहला ओवर उसका था या second over था सलमान आगा का, just missed the stumps. Very very good. या साजिद का था शायद, मगर almost Warner का wicket मिल गया. I think a very good performance from Pakistan. जो fight करे, I think we have to applaud them, because ऐसा दिख रहा था कि एक टाइम पे it's going to be one-way traffic. Australia is going to swipe them in this game as well, and it'll be 3-0. लेकिन they stuck it out, they fought it out. Amir Jamal, sensational innings, whether it was reverse sweeps, pull shots, everything. He batted so well. मजा आया देख के. I think it was a really good innings from him, and he's given Pakistan, I feel, a fight in total. He's batted really well. I didn't expect that from him, and it goes to show. I think he's not, he can bat more now. Like, and he doesn't have to bat at 9. He can bat 8, 7, 8. He can be used in the future. He's an all-rounder. That Pakistan have developed all-rounder right now already, and now it's just about developing him more, making him accustomed to all kind of conditions. And ये ऐसा player भाई जरूरी है टेस्ट क्रिकेट में. इंडिया भी लैक कर रहे हैं आज. शार्दुल ठाकुर पे डिपेंड कर रहे थे, वो नहीं हुआ. अब देखो, देयर बैट्समैन शॉट, maybe if they had an extra batsman like Amir Jamal today, they could have gotten that 150 lead that they were craving for. लेकिन वो नहीं था, उन लोग ऑल आउट हो गए. 98 का लीड मिला. Whereas Pakistan, they stretched the score from 220 to 300 and odd. They added almost 100 runs with the last wicket, and that was thanks to an all-rounder there. And I think जो बैटिंग करा, जो तरीके से उन्हें प्रेशर हैंडल करा, टेल के साथ जो बैट करा, I think काबिल तारीफ है. Excellent performance from Amir Jamal. I really enjoyed his performance. It was really good to watch. And now for Pakistan, they definitely have the new ball, so it's about taking wickets. आपको chances create जब करेंगे, आपको लेना पड़ेगा. You'll have to take your catches. Their seamer short, they have 3 seamers. I think it's Amir Jamal, Hassan Ali, and Mir Hamza. They're playing Sajid Khan as the spinner. Then I'm sure Salman Agha will come and rotate his arm and bowl as well. So there will be spin on offer in Sydney, maybe day 3, 4, 5. लेकिन
the faster bowlers have to create those chances and they have to take them at the slip or jam pe bhi fielders hai, they'll have to take chances. You can't give these guys. आप देखें मिचेल मार्श को जब चांस दिए थे, he made the most of it and won Australia the game last time around. तो आपको जो भी आपको मौका मिलेगा, you'll have to grab it with both hands, and that's where Pakistan have to be alert. They have to be alert in the field. They can make a match of this. Same thing with India. कल I think उन लोगों को chances लेना पड़ेगा. They will create chances. ये pitch पे definitely if they bowl like how they did today, then they will create chances. They will have opportunities. I felt they caught really well today, and the score which could have been 150, 200, they restricted South Africa to 55. A lot of it was because उन लोग hard chance लिया. Slip cordon पे fly हो रहा था ball, लेकिन उन लोग they were safe as a bank and made sure that they took the catches, and that's what Pakistan will have to do as well. It was a very eventful day, man. Today, matlab behtrin. I think the man of the day, I would say, in the Pakistan-Australia game will be Amir Jamal. In the India game, Siraj. Siraj again, incredible, man. The way he's been bowling, he's been outstanding. Miya bhai bolte usko, and his accuracy was outstanding, and there's a lot of pressure for India going into this test match. They started on the right foot. I think फिर भी the batting bhai has disappointed this whole series, and they've disappointed again. Last time around मैं bowlers का ज़्यादा critical था, मगर आज आप ज़्यादा bowlers को नहीं बोल सकते. वो आपको setup करके platter पे दिया और आप you didn't make the most of it. ऐसा नहीं है कि you failed them, but kind of आप बोल सकते हैं कि like जहाँ पे आप you should let them rest their feet and should have played the day out. I think India should have played the day out. They should have been more sensible. Right, that short ball. Up, Test cricket खेल रहे हैं. It's not. Ravi Shastri said this at the break. जब all out with South Africa, he said India have to be sensible. It's not. Yes, you score runs and everything, which Rohit Sharma did initially. लेकिन you have to ride out that short ball. You have to leave the ball. Extra bounce है. छोड़ो ball को. The defense आप solid रखो. You have to have a solid defense and start from there. Once your defense is solid, and you're not letting them come through to you, and you're showing patience, you're showing discipline, फिर उसके बाद उन लोग errors करेंगे और आपको scoring opportunities मिलेंगे. और ये इतना नहीं देखा. You didn't see India grinding out the borders. ठीक है, ऐसे conditions में कभी-कभी you have to look to score, because if you go into a shell, आप जल्दी out हो सकते हैं. लेकिन फिर भी you have to grind them out a bit, especially जब they're on the mat, opposition 55 all out हो गए. आपको इतना अच्छा chance मौका नहीं मिलने वाला है overseas to dominate a game, and you've let them back in the game. ठीक है, 98 का lead है, which is big in this kind of pitch, लेकिन you've let them into the game. आप आराम से उनको on the floor, on the mat रख सकते थे. पूरा टेस्ट मैच आराम से जीत सकते थे, मगर अभी it's going to be a very close game मेरे हिसाब से. And if Markham gets 100 here or something like that, then South Africa in the driver's seat. You have to make sure you're on top of the game. And again, जब आप उतरेंगे second innings में with the bat, India will have to grind it out. ठीक है, आप shots खेलो जब opportunities मिलते हैं, मगर tire the bowlers. If it's a short ball, take it on the chin, let it go. Defense solid रखो अपना. And उस पर आपके बाद you'll have the opportunity to score. Bad balls आएंगे. It's a test match. वो उन लोग भी थकने वाले हैं. Rabada's not going to bowl all day, so you'll have to grind it out and make sure that you create those opportunities. And it's something that you have to do in test cricket. And these youngsters also have to learn. जो शुभमन गिल है, जायसवाल है, श्रेयस अय्यर, उन लोग को भी जल्दी सीखना पड़ेगा कि भाई test cricket है. It's not like simple, and like it's not going to be straight up. आपको एक दो चौके अच्छे मारो, आउट हो गए तो आउट हो गए. नहीं, एक दो चौके अच्छे मारने के बाद भी आपको डिफेंस निकालना पड़ेगा. if you have to look ugly, you have to look ugly. You got to keep grinding it out. And बहुत लंबा खेल है ये, इतना छोटा खेल नहीं है. You have to keep going and make sure you be relentless. नहीं तो the opposition will come back at you and they'll get into the game. That's exactly what South Africa did, in my opinion. तो ये चीज उन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. Only 4 times in the history of Test cricket, which spans 146 years and over 2,500 matches, has there been more damage done than that. There is already talk around the nature of the pitch, and it is valid. Cape Town has been home to variable bounce and borderline sea movement that is borderline excessive. Any time bowlers have been able to maintain a straight line and force the batter to play a shot, they've pretty much an even chance of picking up a wicket. Wonder what is her store in tomorrow. Hope you've enjoyed our coverage. ये क्रिकेट इन्फो का था. तो वही है कि भाई ये पिच अलग है, मुश्किल है बैटिंग के लिए, स्पेशली जब आप स्टंप्स पे टारगेट कर रहे हैं, जब बैट्समैन को टारगेट कर रहे हैं. वेरिएबल बाउंस है, मुश्किल है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन you'll have to find ways. And अगर जब आप bowling कर रहे हैं, you have to make the most of it. Don't get carried away. Attack the stumps. आपको consistent रखना पड़ेगा, and wickets निकालना पड़ेगा. तो yeah, I think both teams right now, like South Africa में तो मजा आता है मेरे को. Like of course you going to talk at the pitch. जब इंडिया में ऐसे मैचेस होते हैं, जब 2-3 दिन में निपट जाता है मैच, हम लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या पिच है, तो ये इसके बारे में भी बात होगी. लेकिन
आई थिंक अब एज क्रिकेटर यू हैव टू जस्ट फॉरगेट दैट एंड यू हैव टू सी कि भाई कैसा खेलना है, एंड यू आल्सो एज फैंस आई थिंक एंजॉय इट, यू नो। ठीक है, धनाधन विकेट जा रहे हैं, लेकिन इट्स एंटरटेनिंग। कभी कभी शॉट्स भी दिखने को मिल रहे हैं आपको, जैसा रोहित शर्मा की बैटिंग थी आज, while he was there it was really good, Shubman Gill, Virat Kohli, लेकिन yes, if you're looking at it from isolated point of view, by they have to make the most of it, आप ऐसा चांस क्रिएट करके फेंक नहीं सकते विकेट, आपको लाइक यू नो टू ग्राइंड इट आउट। ये टेस्ट क्रिकेट है, आप यू नो पूरा खेलना है, जैसा एलिगर खेला था पहला टेस्ट मैच में, ही टुक इंडिया आउट ऑफ द गेम। फर्क क्या था ये गेम और लास्ट गेम में? साउथ अफ्रीका पहली इनिंग में बेहतरीन बॉलिंग, इंडिया पहली इनिंग में बेहतरीन बॉलिंग ये मैच में। मगर फर्क क्या था? साउथ अफ्रीका दे बैटेड इंडिया आउट ऑफ द गेम। डीन एल्गर स्टूड देयर, ही हैड पार्टनर्स टू सपोर्ट हिम, बट ही स्टूड देयर ऑन हिज ओन, 180 मारा। यहाँ पे भी इंडिया करना चाहिए, ठीक है ये पिच और मुश्किल था, एक्स्ट्रा बाउंस था, लेकिन आप को इतना ज्यादा करना नहीं था टू टेक देम आउट ऑफ द गेम। यू जस्ट हैव टू स्कोर 200 रन्स, इट वाजंट लाइक थिंग, आई अंडरस्टैंड दैट इज इजी फॉर मी टू से, लेकिन आप 200 250 अगर मार दिए तो जीत जाते थे मैच, और आप ऑलरेडी 100 for 2 थे, आपके पास वो था। आप यू नो, यू I think in a way they went for the kill, they tried to be a bit aggressive, and that did them in the end. And like even when Rahul got out, Kohli got out, you know, still you should have, आप एक रन भी नहीं मारे, that is going to cost you. It might not, but I feel it's going to cost you. एक रन भी नहीं मारे भाई, नॉर्मली टेल 20 रन 30 रन 40 रन आप मारना चाहिए कम से कम, एक रन भी नहीं मारे, that will cost you मेरे हिसाब से। तो that's where I think India made a big mistake, because ठीक है आप 150 भी मारते हैं, 150 का भी लीड ले लिए, if you score 50 more runs from there, from when Kohli got out, Rahul got out, you would have won the game, maybe not easily, but you would have won the game. Now मेरे को exactly नहीं मालूम क्या होने वाला, कुछ भी हो सकता है भाई ये मैच में। 36 से ट्रेल कर रहे हैं साउथ अफ्रीका, इंडिया जल्दी निपटा सकते कल, लेकिन मे बी हैव टू जस्ट चेस 50-60। बट अगर 100 के ऊपर चले गया, 150, 160, 180, 200, फिर साउथ अफ्रीका का गेम में है भाई। What are your thoughts on the pitch in Cape Town? It's a dangerous pitch, it's difficult. And of course it will get criticized, but I like these kind of things. I also like rank turners and everything, but yes, if you look at it from that perspective, it's not an ideal test match pitch. It's not going to last 5 days in my opinion. I could be wrong, मगर ideal test match pitch at least 4-5 दिन का होना चाहिए। लेकिन I think जिस तरीके से ये मैच चल रहा है, ये तो आज भी खत्म हो सकता था, मैच could have finished today itself. Mehrbani is going to go till tomorrow. It could finish tomorrow too. You don't know what's going to happen. There's a big chance it'll finish tomorrow. And max maybe day 3. If it goes to day 4, day 5, then we can say no, TK, it was just the first day was bad. But I think it's going to finish tomorrow or day after. And so there will be criticism of the pitch. You have to criticize it if it's not fit enough for 5 days. Happy for Amir Jamal. I think incredible भाई, जो बैटिंग करा है पाकिस्तान, एक ऑलराउंडर पैदा कर दिया टूर पे, एंड उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। मे बी और फॉर्मेट भी खेल सकता है वो। he's picked up wickets in this series now, he scored runs, और वो भी प्रेशर के रन्स भाई। 220 for 9, 250 मैक्स दिख रहा था, 260-70 उससे ज्यादा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो 300 के ऊपर लेके गया जो बैटिंग की भाई। नितिन पासी तो हमारे ऑक्टोपस है, नेक्स्ट लेवल प्रेडिक्शन, इज बीन इनक्रेडिबल। मुस्तफा आपको टैग किया इंस्टा में, मैंने 22 दिसंबर को बोला था इंडिया वर्सेस अफ्रीका या फिर पाकिस्तान में ऑल आउट 40 ऑल आउट होगा, आज हो गया भाई, क्रेजी। हाँ मैं आप टैग कर चुके हैं मुझे, मैं फिर से चेक करता हूँ, आपको जो बोले थे इस तरीके के मैं जाके चेक करता हूँ। लेकिन वही बोल रहा था मैं, आप ये कमेंट से पहले कि आप ऑक्टोपस है प्रोडक्शन मास्टर, आप मेरे को वो भी दिए थे कंस्पिरेसी थियरी, वो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेंगी, वो भी हो गया, और आप मुझे 1 साल पहले बोले थे वो, तो यूर द ऑक्टोपस बड़ी। लेकिन हाँ आई थिंक जो अभी स्थिति है मैच का, कुछ भी हो सकता है विकेट से, फिर भी इंडिया के फेवर में, बिकॉज देयर इन द लीड एंड लीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट मैच में। लेकिन कल वो पलट सकता है, मार्करम अगर टिक गया वहां पे और 50-60 रन मार दिया, इंडिया विल बी अंडर प्रेशर। लाइक ऐसे 150 के ऊपर अगर टारगेट मिल गया, जिस हिसाब से आज की खेल देखे, वो मुश्किल स्कोर हो सकता। I think India will want to keep it to 100 max, 120, 130. I don't think they'll want to let it stretch there. South Africa again will target that 200, try to get to 200 lead, try to get to 200 and put pressure on them, because आप देख सके इंडिया का प्रेशर है, स्पेशली यू नो बिकॉज दे प्लेइंग दैट एक्स्ट्रा बॉलर। शार्दुल नहीं खेल रहा, उनके पास आई थिंक जो बैट्समैन भी है टॉप 5-6, उन लोग भी थोड़ा सा कॉशियस हो जा रहे हैं। तो या दे विल बी अंडर प्रेशर। मार्करम आउट हो जाएगा, बट बर्डिंगम से बच के, हाँ दोनों से बच के आई थिंक। देखो मार्करम के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है आउट हो सकता है वो, लेकिन ऑलरेडी 30 मार दिया, अगर वो टिक गया तो वो रन भी मारेगा, ऐसा नहीं है कि भाई वो रुक के खेलेगा, वो रन भी मारेगा, तो उसका विकेट जरूरी है। फिर बेडिंगम भी आई थिंक बहुत क्रिस्प टाइमिंग है उसकी, अच्छा खेल रहा है मेरे हिसाब से।
So they'll have to do that, and tail भी साउथ अफ्रीका का बैक हो सकता है भाई, पहली इनिंग में नहीं हुआ, सेकंड इनिंग में हो सकता, एंड इंडिया विल हैव टू मेक श्योर कि भाई जल्दी निपटाओ ये, गेट बैक इनटू एंड टू बैट एंड चेस इट डाउन. अगर इंडिया जीतती है तो कल ही जीत जाएगी मेरे हिसाब से. अगर साउथ अफ्रीका ये कल बैटिंग कर लिए तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है. बैटिंग कर लिए मतलब 200-250 की लीड ले लिए तो फिर इंडिया के लिए टफ हो सकता है. अब ये भी देखना पड़ेगा कि पिच कैसा खेलेगा कल. How will it be easy to bat? I remember last match में कि second innings थोड़ा second day थोड़ा सा easy हो गया था बैटिंग करने के लिए. आज बहुत मुश्किल था. कल देखते हैं कि अगर easy हुआ तो फिर ठीक है, India will still be in the game. We'll have to see how the pitch behaves. But yeah, overall I think Siraj outstanding. South Africa came back really well with the ball. एलिगर की कप्तानी बहुत अच्छी थी. I think Berger outstanding, फील्डिंग भी अच्छी थी. फिर सेकंड इनिंग्स में मार्करम गुड स्टार्ट एंड आल्सो मुकेश कुमार गुड स्टार्ट. तो इट्स बीन अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट. इंडिया स्टिल अहेड, इट्स प्रॉब्ली स्टिल देयर डे, लेकिन साउथ अफ्रीका आर नॉट आउट ऑफ द गेम. ऐसा अपॉर्चुनिटी जो मिला था इंडिया को, दे शुड हैव जस्ट पुट द फुट ऑन द थ्रोट. नहीं बोलते लाइक खत्म करो, वो नहीं करे उन लोग. आई थिंक उन लोग साउथ अफ्रीका के लिए दरवाजा खुला रखे और साउथ अफ्रीका वो मौका ले रहे हैं अभी, and they're trying to get back into the game. ये मौका नहीं होना चाहिए था. I think India should have batted the day out and put pressure on South Africa. But this is Test cricket. This is why we love it. Ups and downs होंगे और तो देखना पड़ेगा. मुस्तफा भाई, मैं एक भविष्यवाणी कर चुका हूँ. साइम अयूब मसूद अच्छा करेंगे और पाकिस्तान ये टेस्ट जीतेगा. आपको क्या लगता है? भाई पाकिस्तान बिल्कुल जीत सकता है ये टेस्ट, लेकिन आज ये अभी जब थोड़ी देर में शुरू होगा मैच, आई थिंक देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया कैसी बैटिंग करते हैं. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अभी भी, मैं ऑस्ट्रेलिया को भी बैक करूंगा बिकॉज होम पे खेल रहे हैं. बैटिंग विकेट अच्छी दिख रही है. आज D2 D3 मेरे हिसाब से सिडनी में बैटिंग के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये जो पहला घंटा रहेगा वो क्रूशल होगा. वहां पे अगर पाकिस्तान को मौके मिले, दे हैव टू ग्रैब इट. कैचेस मिलेंगे, छोड़ने का नहीं. जैसा अपने अब्दुल्ला शफीक छोड़े थे पहले लास्ट गेम में, वो नहीं छोड़ सकते. आपको जो मौके मिलेंगे आपको लेना पड़ेगा. अगर आप मौका दे दिए इन लोगों को, यहाँ पे उन लोग 450, 500, 600 मार देंगे. तो आई थिंक आई स्टिल फील ऑस्ट्रेलिया, मैं देख चुका हूँ अपार्ट फ्रॉम द इंडिया सीरीज, जब उन लोग होम पे खेलते हैं अगर 300 भी खाए तो उन लोग ऊपर से 500 मारते हैं. आप एशेज देख लो या साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख लो. अभी पाकिस्तान के खिलाफ भी हो सकता है कि भाई ठीक है 300 खा लिए हम लोग, 80 तो फजूल खा लिए. दे विल थिंक दैट कि भाई लास्ट विकेट पार्टनरशिप इतने रन खा लिए, लेकिन they're well and truly capable, especially D2 D3 जो अच्छे कंडीशंस होते हैं जनरली सिडनी में और ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करने के लिए, उन लोग उसका फायदा उठा सकते हैं और 450, 500 मार सकते हैं. मतलब पाकिस्तान को स्ट्राइक करना है पहले घंटे 2 घंटे में. पहला सेशन जो है वहां पे स्ट्राइक करना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा. उसको लेके आओ जल्दी मिचेल मार्श को और उस पर प्रेशर डालो और उसको निकालो, फिर आप गेम में. Pakistan, whatever, if they get a lead in this game, they are in this game, then they're favorites. Not favorites, but they're very close to winning this game. उनको लीड लेना जरूरी है. अगर गलती से ऑस्ट्रेलिया लीड ले ली, उन लोग जीत जाएंगे मैच मेरे हिसाब से. हेड और वार्नर स्मिथ ड्यू है अभी, बिल्कुल. लाबुशेन भी ड्यू है, इन लोग सब ड्यू है भैया. स्मिथ इन पर्टिकुलर आप सही बोल रहे हैं. वार्नर फिर भी 160-70 मार दिया एक इनिंग में. ट्रेविस हेड तो अच्छे ही फॉर्म में चल रहा है, मगर स्टीव स्मिथ मेरे हिसाब से, him and Labuschagne, I haven't seen a long innings from them. शायद हुआ होगा बीच में एक आध, मगर जो कंसिस्टेंटली उन लोग मारते थे सेंचुरीज वो नहीं दिख रहे हैं. तो स्मिथ स्पेशली, हु एवरेजेस लाइक अराउंड 60 as the best average in test cricket in current in the modern day, तो उसके बल्ले से बड़ा स्कोर मैं देखा नहीं अभी तक इन द रीसेंट पास्ट. तो वो देखने को मिल सकता है. आई मीन ये रन बनाएंगे. हाँ भाई बना सकते हैं रन. इन लोग की बहुत बड़े प्लेयर है, रन बना सकते, कोई भी बना सकता. एंड मैं वही बोल रहा हूँ कि आई थिंक कंडीशंस के हिसाब से जो हिस्टोरिकली हम देखे, ऑस्ट्रेलिया स्टिल इन दिस गेम. आई वुडंट से they're behind or anything like that. They can take D2 पे पता चल जाएगा कि कौन आगे कौन पीछे, लेकिन जो हम देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस वाइज, टीम वाइज, एवरीथिंग, दे स्टिल हैव अ गुड चांस ऑफ टेकिंग द लीड इन दिस गेम. मगर वही है, पाकिस्तान को मौका मिल गया, यू हैव टू स्नैप एट इट एंड टेक इट. आप उन लोगों को मौका नहीं दे सकते भाई. ड्रॉप चांसेस ये वो कम कर देना है, स्पेशली जब सिटर्स आएंगे. लेना है भाई, खाना है, यू हैव टू ईट इट एंड गॉबल इट अप एंड मेक श्योर दैट यू डोंट गिव ऑस्ट्रेलिया सेकंड चांसेस. नहीं देना भाई. मिचेल मार्श रहने दो, स्मिथ रहने दो, कोई भी रहने दो. भाई बहुत बिस्मा जी, आई एम सॉरी, आई डोंट नो हु बिस्मा जी इज, बट थैंक यू कार्तिक, मिस्टर कार्तिक फॉर ज्वाइनिंग अस. आप अपने रेगुलर हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया. आपके जो भी कमेंट्स से सवाल है
बोलिए बट या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हाउ डिड यू एंजॉय भाई? आज तो क्रेजी दिन था टेस्ट क्रिकेट के लिए. और साउथ अफ्रीका में नितिन भाई तो साउथ अफ्रीका के फैन है भाई. यहाँ पे जो पिचेस रहते हैं खतरनाक डेडली है. जैसा इंडिया में स्पिन होता है यहाँ के लिए फास्ट बॉलर्स के लिए पैराडाइज है. आई एम श्योर क्रिटिसिज्म होगा पिच का, लेकिन भाई क्रेजी मजा आता है यहाँ पे. सेशन टू सेशन बदलते जाता, कभी ये कभी विकेट कभी बाउंड्री. यू कैन नॉट टेक आइज ऑफ इट. ये बोरिंग नहीं है मेरे लिए. और बाउंड्रीज भी पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि खाली विकेट आ जा रही है. आपको सर्वाइव करना है एज अ बैट्समैन. बाउंड्री भी मार सकते. जो रोहित शर्मा बल्ला चला रहा था आज, शुभमन गिल, वो भी मजा आ रहा था देख के. आई थिंक बहुत क्रेजी जगह है भाई साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए. बट हाँ जी, आप लोगों को कैसा लगा दिन? और लेट मी नो हाउ यू एंजॉयड द थिंग. एंड आपके हिसाब से अभी कौन हेड है ये गेम में? इज इट इंडिया या साउथ अफ्रीका? और वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कौन लाइव है? हाँ जी, हाँ जी, जो यूट्यूब पे बिस्मा लाइव अभी देखा मैं. सही सही है. ओह क्रेजी. मिस्टर कार्तिक, इंडिया प्लेज विद ओनली 7 बैट्समैन. हाँ वही है भाई. लुक इट लुक लाइक अ वेरी गुड कॉल बिकॉज 55 ऑल आउट हो गए थे. मुकेश कुमार आके ही मेड श्योर कि भाई विकेट लिए खत्म करे वो इनिंग्स को. मगर देन वो एक्सपोज हो गया सेकंड इनिंग में, जहाँ पे आपकी टेल कुछ भी नहीं करी. आप 6 विकेट दे दिए और 1 रन भी नहीं मारे. 0-0 अंडा शून्य. तो वो बहुत डेंजरस था भाई. मगर अगेन आपको टॉप ऑर्डर को ब्लेम करना पड़ेगा भाई. ये रोहित शर्मा रहने दो, शुभमन गिल रहने दो, टू एन एक्सटेंट विराट कोहली, केएल राहुल भी रहने दो, श्रेयस अय्यर भी. आपको लाइक बॉलर प्लेट पे दे दिए 55. कोई प्रेशर नहीं है भाई, कोई प्रेशर नहीं है. 55 ऑल आउट ठीक है. पिच मुश्किल है मैं मानता हूँ, लेकिन आप स्टार्ट भी दे दिए भाई. रोहित शर्मा आके रन भी मारा. उसको कंटिन्यू करना है भैया. आप डीआरएस भी आपके फेवर में आ गया, 100 आपके फेवर में आया. आप उसको कंटिन्यू करो. आप लगातार खेलते जाओ और प्रेशर करो. आप ये गेम निपटा दे सकते थे. आज ही खत्म हो जाता था गेम. आप साउथ अफ्रीका के लिए दरवाजा खुला रख दिए, विंडो खुला रख दिए, जो भी है खुला रख दिया. उन लोग अब वापस आएंगे और आपको प्रेशर में डालेंगे. मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ये गेम क्लोज हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि लाइक इंडिया वोंट विन. दे कैन स्टिल विन दिस. दे शुड विन दिस टेस्ट मैच. लेकिन अब मुश्किल हो सकता है बिकॉज आप जब ऑपोजिशन स्पेशली होम टीम 1-0 लीड कर रहे हैं, उनका कप्तान का लास्ट गेम है लाइफ में जो भी है, दे नॉट गोइंग टू लेट दिस गो. पिच में कुछ नहीं है. स्टब्स, अय्यर, जायसवाल जैसे प्लेयर खेल रहे हैं. तभी ऐसा नहीं नहीं पिच में मैं समझ सकता हूँ आपकी बात. मैं समझता हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं. लेकिन अनइवन बाउंस ही है नितिन पास ही. नितिन भाई अनइवन बाउंस बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है बैट्समैन के लिए. जब अनइवन बाउंस होता है आपको पता नहीं एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है. आप ही देख लो, एक कीपर नीचे पकड़ रहा है, एक एकदम से आपको एक्स्ट्रा ग्लव दे रहा है. ठीक है मैं मान सकता हूँ कि एक दो स्पेशली साउथ अफ्रीका इनिंग्स में जो डाउन द लेग साइड था या श्रेयस अय्यर की शॉट देख लो, वहां पे गलतियां हुए. लेकिन बाज डिलीवरीज आप कुछ नहीं कर सकते. और आप विकेट वाले डिलीवरीज मत देखो. आप ये देखो उससे पहले जो 5-6 बॉल हुए. जैसा मुकेश कुमार जो सेकंड इनिंग में विकेट लिया था, आई थिंक कौन सा पहले अलीगढ़ का लिया था, उससे पहले बिफोर ही टुक द फर्स्ट विकेट, हाउ डिड ही सेट अप द बैट्समैन. एक उन्हें कॉर्कर डिलीवरी दिया और उसमें पिच का वो भी था. द पिच प्लेड अनइवन इन दैट टाइम. दैट वर्क्स ऑन द बैट्समैन्स माइंड. और फिर गलती आती है. आप सिर्फ हाइलाइट्स में वो मत देखो कि विकेट कैसा गया, अरे ये तो बैट शॉट था. उससे पहले देखो कि भाई बॉल किधर पिच हो रहा था, किधर बाउंस हो रहा था, क्या हो रहा था, बैट्समैन कैसा प्ले मिस कर रहा था. देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार दिस पिच इज डिफिकल्ट. अनइवन बाउंस इज अ ट्रिकी थिंग. आई अंडरस्टैंड आप कहां से आ रहे, लेकिन अगर आप इन आइसोलेशन नहीं, आप ओवरऑल अगर देखें तो it makes it difficult. Depends on how pitch plays on second day. In last test match, second day played well. This is exactly what I was saying as well, Karthik bhai. If you saw in the last game, it became a bit easier to bat on the second day. And if that happens, then 200 plus lead South Africa get that, it'll become difficult to chase. I just have a feeling that it'll be slightly better to bat on for both teams, but you will have your opportunities, and India have to grab those opportunities. They have to bowl better than they did in the first test match. उन लोगों को भाई consistently वो देखना है. अभी प्रसिद्ध कृष्णा still not convincing me despite 55 all out by South Africa. He's not convinced me. I think Siraj has been outstanding. Mukesh has been probably India's second best bowler. Bumrah has been outstanding too. लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा also has to maintain that pressure. आपको जल्द से जल्द South Africa को out करना है. Even I think they need to get Markram and Bellingham out before this lead finishes. अब क्या 36 का लीड है, समथिंग लाइक दैट. अगर आप उन लोग को उससे पहले लीड लेने से पहले 2 विकेट ले लिया आप, फिर आपका गेम है. उसके बाद
South Africa the others when the tail comes into bat, if they still don't have the lead, South Africa, then they will be under pressure. और 40-50 तो आप चेस करना चाहिए. Yes, 36 is that number, man. Takes me to Adelaide every single time. तो आपको 2-3 विकेट अभी लेना पड़ेगा पहले घंटे में, आई थिंक. बट दोनों टेस्ट मैचेस भाई बहुत अच्छे हैं. अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का भी जो पाकिस्तान फाइट करी, आई थिंक काबिले तारीफ. जो आमिर जमाल बैटिंग किया, स्पेशली विद द टेल आउटस्टैंडिंग. बिफोर दैट रिजवान, आई रिमेंबर जहां पे प्रेशर रिलीज हुआ पाकिस्तान के लिए, देवर लाइक 50-60 फॉर 4, और रिजवान आई थिंक कमिंस को मारा था ऐसा स्क्वायर लेग के, ना हेजलवुड को मारा था शायद उधर स्क्वायर लेग के ऊपर. वो जो शॉट खेला T20 वाला, सेकंड द नेक्स्ट डिलीवरी ही ट्राइड द सेम थिंग, गॉट बीटन. मगर वो जो शॉट था, रिलीज सम प्रेशर एंड इट शोड द अदर बैट्समैन कि भाई आप शॉट खेल सकते हैं ये पिच पे. तो वो काफी मुझे अच्छा दिखा था. And Gideon Rabada comeback score after team was a game changer for me. It was outstanding, man. It was incredible. And the way India collapsed, Ravi Shastri said it on air कि भाई if you went to take a dump and came back, India are all out for 153. So अस्सलाम वालेकुम भाई, मजा आ गया भाई आज सिराज की बॉलिंग देखे. वालेकुम सलाम. आजम भाई आखिरी बॉलिंग था, हिला दिया मियां भाई. इनक्रेडिबल बॉलिंग द होल ऑफ हैदराबाद इंडिया. आई एम श्योर वी आर वेरी एक्साइटेड वाचिंग दैट. बेहतरीन बॉलिंग था. एंड आई थिंक ही सेड इट, सेट अप द गेम इंडिया के लिए ऑन अ प्लेटर. लेकिन बैट्समैन कुड नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट. स्टिल आप लीड मिल गया, जो इंपॉर्टेंट लीड हो सकता है ये पिच पे, ये मैच में. लेकिन फिर भी आई थिंक अगर बैटिंग ज्यादा बेहतर करी तो फिर ये गेम इजी आप जीत सकते थे. अभी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जीतना चाहिए. और जीते तो सिराज मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच होना चाहिए. बिकॉज 55 ऑल आउट करना किसी को भी इजी नहीं है. वो खासतौर पे आप अवे फ्रॉम होम खेल रहे हैं, तो काबिल तारीफ है. सिराज पहले एशिया कप फाइनल में, अब यहाँ पे ठीक है वर्ल्ड कप, ही डिडंट हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ टाइम्स, मगर ही शोन कि भाई वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है. अप्स एंड डाउन्स तो हर खिलाड़ी के लिए होता है, लेकिन ये बंदा वर्ल्ड क्लास है, स्किल है इसमें. And the way he bowled today, outstanding. I think only one ball down the leg side was a bit lucky. Apart from that, class bowling, भैया. 8 जाने डक आउट भाई यार बैटिंग थी. वाओ, मतलब एकदम से ऐसा कोलैप्स करना. मेरे को तो 7 बजे क्या बोले भाई आजम भाई, सॉरी 7 जने, हाँ 7 जने, वही 7-8 जने. जो भी 153 फॉर 4 था, फिर 153 ऑल आउट. इमेजिन आप लाइक खाना बनाने गए या कुछ भी करने गए, एकदम से ऐसा मैच कोलैप्स हुआ. इनक्रेडिबल. We surprised South Africa played a batsman shot in this match. I am surprised both South Africa and India played both South Africa and India played a batsman shot. I am surprised. They're both going for the kill. More India, I think I'll be surprised because especially after the first game, I know that the bowling let them down, but it's not like the batting did wonders. And if you saw this collapse, you will question that again. Lekin you can say in a way it was the right decision. If you got a team 55 allowed, you still got the lead, you still got everything. It might have been the right decision in the end. You have to blame the top order. I can't say that why did you play a batsman short. I think India जो स्टार्ट पे मिला, आप रोहित शर्मा को देख लो, शुभमन गिल को देख लो, विराट कोहली को देख लो, सब स्टार्ट किया है भैया. उसमें आप कन्वर्ट करना पड़ता है. टेस्ट क्रिकेट है, चैलेंज होगा. ऐसा नहीं T20 गेम में आप 5-6 अच्छे शॉट खेल लो, मैच जिता दो. नहीं, आपको 5-6 शॉट के बाद आपको और मुश्किल बॉल आएंगे. ऐसा नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू गेट इजियर टू बैट. एट टाइम्स इट विल गेट मोर डिफिकल्ट समटाइम्स व्हेन यू आर सेट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, कंडीशंस, बॉलर्स, बॉल चेंज होता है, ये होता वो होता. तो आपको उस हिसाब से खेलना पड़ता है. यू हैव टू राइट इट आउट. यू कांट से कि भाई ठीक है मैं 2 अच्छे शॉट गए अभी तो मैं फोड़ दूंगा. नहीं, आपको फिर डिफेंस में आना पड़ेगा, फिर बॉल छोड़नी पड़ेगी, फिर ईगो को कम करना पड़ेगा. ये करना चाहिए भाई. यू हैव टू डू दैट. इट्स टेस्ट क्रिकेट. Is there any world record today in single day 23 wickets have fallen? If there are any records, I think there are. I'm not sure, but I think this is the fourth highest wickets taken in a day, or third highest, something like that. Ibrahim Bhai is very good at stats. Maybe he can tell me, but some sort of record has to be, man. I'm more disappointed with Shreyas inclusion. India should be playing. Yeah, man, and Shreyas Iyer is getting found out. अब देखो he'll say कि भाई मैं short ball पे out नहीं हुआ, मगर वो short ball की वजह से out हो रहा है. Since he gave that interview, I don't think first of all he should have said that in that interview, because what has happened is made him a target, and now he is conscious himself कि भाई मैं short ball पे out नहीं होना मुझे. मगर वो short ball पे out नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से ही out हो. उसको सेटअप कर रहे हैं short ball के लिए. He's getting pinned on the back foot, he's getting pinned on the front foot, he's not being able to move around because he's expecting that short ball. उस पे आउट नहीं होना है, मगर दूसरे बॉल पे आउट हो रहे हैं आप, बिकॉज वही चक्कर में कि भैया कि शॉर्ट बॉल आ रहा है, शॉर्ट बॉल पे आउट नहीं होना, दूसरे बॉल पे आउट रहा है. एक बॉल नीचे रहेगा, एक बॉल ऊपर आपका ग्लव लेगा आप, मगर चक्कर तो वही है शॉर्ट बॉल का. If you remove Kohli, Rohit and Gill, more India only scored 8 runs with. So yeah, man, that is sad. KL Rahul just given his wicket, who kept taking ball नहीं था, वो wicket taking ball नहीं था. बोल सकते हैं ये
आई थिंक रोहित शर्मा भी नहीं देना चाहिए था भाई विकेट, इतना अच्छा स्टार्ट देके फिर भी आप वो भी आप डीआरएस भी एक अच्छा बचा लिए थे, आपको डीआरएस आपको बचा लिया था, उस पे आप कैपिटलाइज करना चाहिए था, तो आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड विद दैट. शुभमन गिल आल्सो, मैन, ही वाज बैटिंग सो वेल. To just show some more maturity, that the guts it out a bit more in these conditions. You got to guts it out. Like Dean Elgar is the perfect example. Kohli, Rahul, when you're in these situations, these players need to step up and finish the game for you. I still feel it's going to be an amazing game. लेकिन ये नहीं हो जाना चाहिए कि साउथ अफ्रीका इतना बड़ा लीड ले लेते हैं फिर, which is I doubt it'll happen, but you never know, man. If they do it, they did it already in the first test, it can happen again. Even last time I doubted South Africa would take the lead, they did. So if it happens again, then it'll be very sad for India. अगर यहाँ से आप टेस्ट मैच हारते हैं तो there's serious concerns. There's serious concerns. नितिन भाई ये बताओ, आप साउथ अफ्रीका के बड़े फैन है, मैं सुना अजीत अगर भी पहुंच गए वहां पे. अफगानिस्तान टीम सेलेक्ट करने के लिए 3 सेलेक्टर कहते उधर. There's 3 selectors over there, bro. What's happening? What's happening in South Africa? 3 सेलेक्टर है अफगानिस्तान के लिए. मतलब कोई चक्कर है वर्ल्ड कप का, रोहित शर्मा को इंक्लूड करना नहीं करना, विराट कोहली करना है नहीं करना, ये कोई चक्कर चल रहा है उधर. भाई 3 सेलेक्टर क्यों बैठे हुए वहां पे? वो तो ऑन कॉल भी हो सकता. 3 have landed in South Africa, if I'm not mistaken. इंडिया को अफ्रीका के साथ 5 मैच को खेलना चाहिए. भाई बिल्कुल सही है, ये 2 टेस्ट मैच नहीं होना चाहिए. आज रवि शास्त्री भी ऑन एयर बोला, कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे ये 2 टेस्ट नहीं होना चाहिए था. मिनिमम 3 to 5 खेलना चाहिए. आप 5 खेलो और ये कंडीशंस में ठीक है, मुश्किल हो सकते है वो जो भी है, मगर यहाँ पे खिलाड़ी बनते हैं, यहाँ पे भाई मजा आता अगर जीते तो. दिस इज द टेस्ट मैचेस यू वांट टू विन. अब इंग्लैंड के अगेंस्ट आप जीतेंगे 4-0 5-0, उस पे क्या मजा है? यू वांट टू विन विन इन दीस कंडीशंस. Well, it's difficult when it's hard. And if India win it from here, I mean, I'll applaud them because आप पहले टेस्ट मैच हारे, बहुत बुरा खेले, और आप कम बैक करके यहाँ जीते. That I like that. Even if you don't win the series, आप 1-1 करे, I respect that. मगर अभी आप विनिंग पोजीशन में थे, उसको कंप्लीट करो भैया, आप कंप्लीट करो. आप इंग्लैंड से ठीक है, वो भी जीते बेसबॉल, उन लोग के खिलाफ जीते, ठीक है, थोड़ी खुशी मिलेगी सबको, लेकिन ये कंडीशन में जीतना भाई अवे फ्रॉम होम, खास तौर पे जब आप नीचे मैट पे है, लाइक यू लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट मैच, यू हैव लॉट टू प्ले फॉर, दिस प्रेशर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स ऑन द लाइन. सीरीज मत हारो आप, यहाँ पे अभी भी मौका है कि आप लेवल करो, थोड़ा इज्जत लेके जाओ वापस. एंड ऐसे कंडीशन में आप जीते, कोई भूलेगा नहीं. सिराज 6 विकेट लिया भाई केप टाउन में. आप देखो जब टूर्स होते हैं, ये बहुत हिस्टोरिक टूर्स होते हैं, लोग याद करते हैं. आप 10 साल पहले जो हुआ याद रहता है भाई. तो श्रीशांत 2006 में जो डरबन में बॉलिंग करा, अभी तक याद है. जो छक्का मारा था एंड्रू नेल को, वो भी अभी भी याद है. तो ये जो टूर्स होते हैं, ठीक है वर्ल्ड कप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये यादगार होते हैं. यू रिमेंबर दीज थिंग्स. When the going is tough, especially we know that India's and subcontinent teams in general are not good touring. Matter of fact, anyone like touring apart from maybe Australia, everyone struggles on tour. Even Australia to a certain extent will struggle. So if you win these kind of series or matches, at least abroad, today यादगार होती, you remember it. यादगार, सॉरी. आपके हिसाब से साउथ अफ्रीका लीड लेगी या नहीं? भाई लीड तो ले लेगी मेरे हिसाब से. देखो मैं गलत हो सकता हूँ बिकॉज कोलैप्सेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं आज, लेकिन आई थिंक लीड ले लेगी. मगर ये कितना लीड हो, आई थिंक 50 to 100 लीड है तो इंडिया का गेम है. अगर 150 to 200 लीड तो साउथ अफ्रीका का गेम है. फिर भी भाई कुछ भी हो सकता है, वही देखना पड़ेगा कि दूसरा दिन कैसा प्ले आउट. लाइक कार्तिक भाई जो बोले थे लास्ट टाइम राउंड, लास्ट टेस्ट मैच जो था सेकंड डे थोड़ा बैटिंग बेटर हो गया था, तो अब देखना पड़ेगा बैटिंग कैसा होता है. अगर ऐसी मुश्किल होगा पहले दिन के जैसा, तो फिर 50-100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. लेकिन हाँ, आई थिंक साउथ अफ्रीका लीड तो ले लेगी. कितना लीड लेगी वो नहीं पता. एंड इंडिया को जितने भी विकेट्स ले सकते लीड से पहले, अगर साउथ अफ्रीका get a lead without losing a wicket tomorrow, then they have a very good platform. मेरा भी वही प्रेडिक्ट है. हाँ, देखते हैं क्या होता. बट मजा आता भाई साउथ अफ्रीका में to see test matches, to see these kind of games, especially when it's a very seesaw kind of situation. Africa and Australia, even Zimbabwe, ये तीनों अपनी पिच को वैसा इकट्ठे हैं जैसे वो थे. लव द लेगेसी, बट इंडियन को लेगेसी से कुछ लेना देना नहीं है. Yeah, I mean, and you see even South Africa crowd आती है, they enjoy the test cricket. आप वो passion भी देखो. I think किसी का विकेट गया था शुभमन का, किसी का crowd जो लास्ट टेस्ट मैच में, ये टेस्ट मैच में भी crowd आके एंजॉय करते टेस्ट मैच. आज भी आप सिडनी देख लो, सीरीज डेड रबर है, लेकिन लोग उधर फ्लाइंग इन. वसीम अकरम was also saying कि भाई it's good to see people enjoying
दिस काइंड ऑफ क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट आके इतना लोग आके देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा दिखता। ओके भाई, टाइम हो रहा सब भाई भाई टाइम हो रहा सम का, सोने का टाइम हो रहा। अच्छा सोया भैया, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री ऑफ टेस्ट टीम collapsed and lost 6 wickets without scoring a run. Yeah, I'm sure, man. I was so surprised seeing that they didn't even score one single run. विराट का जब विकेट गिरा क्राउड पागल हो गया था। हाँ भाई, विराट कोहली का विकेट जब खासतौर आपको ऑपोजिशन होता है विराट कोहली, वो सेलिब्रेट करेंगे, बहुत बड़ी विकेट होती है। आज भी उन्हें स्टार्ट दे दिया था 40-46 ऐसा मार दिया था, तो he was looking dangerous, some nice gorgeous drives, straight drives and everything, लेकिन फिर वही विकेट चलेगा at a crunch situation. बट हम लोग भी कल मिलेंगे, होपफुली फैज भी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। इट विल बी अ गुड डे। नितिन भाई आप भी आ जाओ कल, आपको पसंद है साउथ अफ्रीका। हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे होंगे। डे 2 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे। अगेन मोहम्मद सिराज इज डे, देन रबाडा एंड गिडी पुल्ड इट बैक, देन मार्करम बैटेड वेल, मुकेश कुमार आल्सो पुल्ड इट बैक, सो इट्स बीन a lot of contributions, but I would still say Mohammad Siraj, it's been his day. 6 wickets, not a joke, incredible bowling from him. So भाई अफ्रीकन लीग आ रही है, आपकी टीम टाइटल ने बचा पाएगी नहीं? हाँ भाई, शायद नहीं बचा पाएगी, मगर उन लोग हिस्ट्री में जाएंगे इतिहास में कि भाई इन लोग जीते थे पहला ऐसे T20 सनराइजर्स। ये आप भी याद रखेंगे, मैं भी याद रखेंगे, वो भी बात करेंगे उसके बारे में भी, ऐसे T20 के बारे में एंड इन जनरल क्रिकेट के बारे में बात करें। कल भी जुड़िए हमारे साथ नितिन भाई, आपके दोस्तों को भी लेके आओ एंड कमेंट्स और सवाल खूब आप पूछते रहिए हमारे से। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। कल आईपीएल जीत सकते हो आप। हाँ, पैटी आ गया हमारे पास, देखेंगे क्या होता है, वो भी बात करना है भाई आपसे। शुक्रिया आप जुड़े बहुत टाइम के बाद। एंड एवरीबॉडी एल्स, इब्राहिम भाई, कार्तिक भाई, मोहम्मद आसिम भाई, जो भी ज्वाइन करे अलॉन्ग विद नितिन भाई, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और कल फिर आप लोगों से मिलेंगे आफ्टर डे 2। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मेक श्योर यू एंजॉय द गेम टुमारो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। कैच यू गाइस टुमारो, टेक केयर एवरीवन।